Welcome students, welcome back. Myself Kukreja Rahul, and we are taking the chapter number 6 algebraic expressions revision. Okay, so welcome back to the Gyan Manjari Modern School. Now as per the previous session, we have already completed the till the question number 9. Okay, now in the question number 10, that is 32x square minus 16x plus 48 kilograms of sugar is stored in 8 bags in equal quantities. How many kilogram of the sugar are there in each bag? Okay, so let's start. Question number 10 from the chapter checkup. Okay. 32x square minus 16x plus 48. Okay, so kilograms of sugar is stored in 8 bags. This kind of this kilogram of sugar are stored in the 8 bags. So it says that how many kilogram of sugar are there in each bag. So we need to find the sugar for the each bag. Okay, so for each bag we have to divide the 8 bags with the total kg of sugar. Okay, so therefore we need to take division of the all these numbers. So as per the previous session, again we have to split 8 in the all 3 terms. Clear? We have to split 8 in the all 3 terms plus 48 upon 8. So 8 ones are 8 fours are 8 ones are 8 twos are 8 ones are 8 six are. So therefore your answer will be 4x square minus 2x plus 6. This is the answer of the question number 10. Okay, now take question number 11. Simplify. Okay, in this one now we have to divide binomial with the binomial. Okay, binomial, that means here given that is trinomial, but that's also known as a binomial, and divide with the x minus 2, that is a binomial, so it's also known as a polynomial. Okay, so polynomial is divided with the polynomial, or either you have to tell them that is trinomial with divide with the binomial. Okay, so let's start. Question is x square minus 16x plus 28 and that are divided with the x minus 2. Okay, so now we know about that here binomial is given, so we don't divide with the this kind of the method. Okay, हम इसको इस क्वेश्चन को इस मेथड के साथ डिवाइड नहीं कर सकते, राइट. सो नाउ वी हैव टू डिवाइड विद द डिफरेंट काइंड ऑफ द मेथड. सो डिफरेंट मेथड, दैट इज लॉन्ग डिवीजन मेथड, एंड दिस मेथड आर यूजफुल इन द हाईएस्ट स्टैंडर्ड. सो प्लीज टेक अटेंशन. Here we have to divide x minus 2 with the x square minus 16x plus 28. Okay, so in this method we have to first of all check first term with the first one. Okay, so at here my number, that is alphabet, that is x, and here my alphabet, that is x square. So which number will multiply with the x to form a x square? Which number I will multiply with the x to form a x square? X.
right? Very good. So I'll multiply x with the x to form a x square. Clear? Now x is multiply with the 2. That's compulsory rule that x that should to multiply with the second variable also. So x is multiply with the second variable, that is x into 2, that is minus 2x. Clear? Clear? Now at here, this is the division. Okay, this is the division of the polynomial. So in any kind of the division, okay, in any kind of the division, what we have to do in the numerical division, what we have to do, we have to subtract the terms. Okay, so in this one also we have to subtract the terms. So when I subtract the terms, we have to change the their signs. Okay, so x square are in the positive sign, so it's changed in the negative, and 2x that are negative, so it change into the positive. Okay, that's a rule to change the sign. Okay, that's a rule. Okay, so now x square that are positive and x square that are negative, both of them are cancelled out. Now 16x that are negative and 2x that are positive. Now we have to consider the sign of the 2x as a positive 2x, not as a negative 2x. Okay, so we don't need to consider this sign. We have to consider now plus 2x. Okay, because we have to change the sign of that, because we have to take subtraction. Clear? We have to take the subtraction. So now minus 16 plus 2, that are minus plus minus, 16 minus 2, that is 14x, and bigger number is minus 16, so my answer is minus 14x. Now 28 shifted to at here, 28 comes down, that is plus 28. Clear? This first step. Now again repeat the whole step with the this one terms. Okay, now repeat all these steps again with x and with 14x. Here my first term in the both of them, that is here of x, and here is minus 14x. So which term I will multiply with the x to form a minus 14x. Okay, so I will multiply 14 minus 14, that are multiply with the x, so answer will be minus 14x. Right? Right? So now it's a compulsory rule, that is multiply 14 with the second term 2 also. Okay, correct. So minus 14 minus 2, so minus minus, that are plus, 14 2s are, that is 28. Done? Done? Okay. Now in the subtraction we have to change the sign. Okay, so here 14x that are negative, so it's changed as a plus, and plus 20 that are changed as a minus. Now again consider the sign of 14x as a plus 14x and 28 as a minus 28. Okay, we have to consider the sign of the 28 as a negative 28 and 14x as a plus 14x, because we have to take subtraction at here. So therefore we have to take the interchange sign. Okay, जो साइन हमने चेंज कर ली है वो साइन हम कंसिडर करेंगे, ना कि पहले वाली. ओके, हमने अभी जो साइन चेंज कर ली वो साइन हम अभी यहाँ पे कंसिडर करेंगे, बिकॉज ऑफ दी वी आर टेकिंग दी सब्ट्रैक्शन एट हियर. यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं इसलिए. क्लियर? सो नाउ फॉर माइनस 14 और ये प्लस 14, देन माइनस 14 प्लस 14 दैट आर 0, कैंसल आउट. Here this is the plus 28 and here that is minus 28. So plus 28 minus 28, that is 0. Then theta again cancel out. So my answer is 0. Okay, my remainder is 0. So my final answer of this question, that is x minus 14. Okay, my final answer for this one, that is x minus 14.
ऑलवेज हम कौन सा आंसर कंसिडर करते हैं डिवीजन में, क्वेश्चन में जो आता है वही आंसर कंसिडर करते हैं ना, राइट। इफ आई एम टेकिंग डिवाइड विद द 3 विद द 18, so 3 6 18, रिमाइंडर इज 0, देन माय आंसर इज 6, राइट। हम ऐसे कंसिडर करते हैं ना न्यूमेरिकल्स वैल्यू में, राइट। व्हाट वी हैव टू डू इन द न्यूमेरिकल वैल्यूज, दिस इज माय आंसर एंड दिस इज माय रिमाइंडर, राइट। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है हमको, दैट इज 0, देन माय फाइनल आंसर दैट इज x माइनस 14, क्लियर। अगेन वी आर टेकिंग द example of this kind of the polynomial, okay। so first of all do both of the questions, complete कर लो दोनों questions पहले, okay। this is the question number 11, not a 12, it's my mistake, okay। so first of all दोनों questions note down कर लो, then we are moving on the next question। Note it down. Now in question number 11 we are taking B1, okay, this is the A1, now we are taking B1, B that is a square minus 21a plus 108, a square minus 21a plus 108 and divided with the a minus 12, okay, divided with the a minus 12, so now take same method as the previous question, okay, we are taking long division, a minus 12 is divided with the a square minus 21a plus 108, okay। so now same take first variable to compare, a के साथ हम कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर आएगा, that is a, right। so a into a that are a square, then that's a compulsory rule, that is multiply a with the also 12, okay।
हमने a को a के साथ कर लिया मल्टीप्लाई, तो 12 के साथ भी कंपलसरी करना पड़ेगा। दैट्स अ कंपलसरी रूल टू ऑल्सो मल्टीप्लाई a विद द 12. So 12 into a, that is minus 12a, right? So again we are taking the subtraction, okay, because the division मेथड कर रहे हैं तो यहाँ पे डिवीजन में सब्ट्रैक्शन आएगा ही आएगा, right? So when I take subtraction of the numbers, we have to change the sign. Here a square that are positive, so we are taking the negative, and 12 that is negative, so we are taking that as a positive, okay? पॉजिटिव है वो नेगेटिव लेंगे और नेगेटिव को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। क्लियर? ए स्क्वायर पॉजिटिव, ए स्क्वायर नेगेटिव, देट आर कैंसल आउट बिकॉज प्लस माइनस माइनस 1 minus 1 0. Now 21 that are negative and 12 are we have to 12 consider 12 as a positive. Okay, we have to consider 12 as a positive, not as a negative, because हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं एंड वी हैव टू चेंज द साइन, और हम जो साइन चेंज करेंगे वही साइन कंसीडर हम करेंगे। आई एम अगेन एंड अगेन रिपीट ऑल दिस मेथड एंड ऑल दिस टर्म्स, ओके। देन आपको अभी याद रखना है कि हमने साइन क्यों चेंज की एंड व्हाई शुड आई टेक दी चेंज द साइन, हम क्यों चेंज होने वाली साइन हम लेंगे, ओके। चेंज होने के बाद जो साइन आएगी हम वो साइन क्यों लेंगे वो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज वी हैव टू टेक सब्ट्रैक्शन एट हियर, हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, ओके। एंड दैट्स अ कंपल्सरी रूल टू चेंज द साइन व्हेन वी हैव टू टेक सब्ट्रैक्शन, ओके। तो अभी -21 + 12, तो 21 में से 12 माइनस करेंगे, सो आपको आएगा 9a, एंड 21 इज बिगर नंबर देन that are in the negative, so 9a that are negative, 108 that are shifted to 8 here, 108 comes down, so therefore plus 108. Clear? So take again same repeat, okay, again same repeat the all this method, okay, repeat the all these steps again. What is the steps? That is check first term with the first one, okay. फर्स्ट को फर्स्ट के साथ चेक करेंगे, एक के साथ क्या मल्टीप्लाई करें तो 9a आएगा, वो भी -9a. विच नंबर शुड मल्टीप्लाई विद द 9 टू फॉर्म -9a? सॉरी, विच नंबर वी शुड टू मल्टीप्लाई विद द a? Okay, which number should to multiply with the a to form a -9a? We have to multiply -9, right? -9 into a, that are -9a, right? So we have to take here as a -9, -9 into a, that are -9a, okay. And that's a compulsory rule to multiply with the second term also. So 9 that are multiplied with the 12, 9 12s are 108, right? And minus that are plus. Ready? Done? So now again we have to take subtraction at here. So अभी again subtraction करेंगे तो क्या करेंगे, हम साइन चेंज करेंगे. So when I change the sign, -9a that are form the plus 9a, and plus 108 are converted into the -108, okay. So -9a plus 9a that are cancel out, because minus plus minus 9 minus 9 0, plus 108 and -108, plus 108 minus 108 that are 0, okay. Plus minus minus 108 minus 108 that are 0, okay. So both of them are cancel out, then remainder हमको क्या बचेगा, कुछ बचेगा नहीं. So therefore that is a 0. Clear? And my answer will be a -9. मेरा फाइनल आंसर क्या आया यहाँ पे, a -9. Clear? Okay, clear? If you have any query, please comment in the comment section. Then we know that you have any query and doubt in this kind of the method, okay. If you have any query,
Next one, that is we are taking not C1, we are taking D1 at here. Okay, हम D लेंगे, C नहीं लेंगे, because that's again easy and that are same method. D में भी same ही method है, but there is a different question. So that is 9a square plus 6a, 9a square plus 6a plus 1 that are divided with the 3a plus 1. Okay, so now again divide that, then again हम divide करेंगे तो क्या करेंगे, 3a यहाँ पे बाहर रखेंगे, 3a plus 1, okay, and divide with the 9a square plus 6a plus 1. Clear? So what we have to do, same method we have to follow. What we have to check, first term, okay, दोनों में first term check करेंगे. What should we have to multiply 3a, हम 3a के साथ क्या मल्टीप्लाई करें तो मुझे आंसर 9a स्क्वायर आएगा. 3a के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9a स्क्वायर आएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 के साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 आ जाएगा, राइट. एंड a के साथ a मल्टीप्लाई करें देन a इंटू a, दैट इज a स्क्वायर फॉर्म होगा. ओके, राइट. सो नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई 3a विथ दी 3a, then 3a plus 3a into 3a, that are 9a square, right. So that's a compulsory rule. Again now follow the rule, that is 3a that are should to multiply with the plus 1. Okay, that's a compulsory rule. अगर हमने पहले टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया है तो हमको दूसरे टर्म के साथ भी करना पड़ेगा, राइट. So 3a that are multiply with the 1, that is 3a. Take subtraction, right. Subtraction करेंगे तो क्या करेंगे, साइन चेंज, राइट. दोनों टर्म्स कौन से हैं, पॉजिटिव है, ओके, प्लस में, देन दोनों क्या आ जाएंगे, माइनस. ओके, नाउ प्लस 9a माइनस 9a that are 0, then that are cancel out, done. 6a minus 3a, now we have to consider the minus sign, because हमने अभी आपको बोला था, that is कि अभी जब हम साइन चेंज करेंगे तो चेंज की हुई साइन ऑलवेज हम कंसिडर करेंगे. सो प्लस 6 माइनस 3 क्या होगा, प्लस 6 माइनस 3 प्लस माइनस 6 माइनस 3, ओके, and bigger number that are plus 6, then plus 3a, and 1 comes down. Clear? Then again repeat this same method. Okay, again repeat this same method. Okay, again repeat this same method and all these steps repeat again. करें तो अगेन यहाँ पे 3a एंड यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म दैट इज 3a. व्हाट शुड आई मल्टीप्लाई विद द 3a टू फॉर्म अ 3a. 3a के साथ क्या मल्टीप्लाई करें तो 3 आएगा, 1. ओके, वी नो अबाउट दैट. एनी नंबर दैट आर मल्टीप्लाई विद द 1 देन आंसर दैट आर नंबर इटसेल्फ. पता है ना, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 6, 9 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 9, 10 मल्टीप्लाई विद द 1 दैट इज 10. देन एनी नंबर मल्टीप्लाई विद द 1 then answer will be number itself. Okay, so 3a के साथ क्या मल्टीप्लाई करें तो आंसर 3 आएगा, नंबर itself ही आएगा 3a, then 1. So we are taking 1. So 1 that are multiply with the 3a, so that is 3a, 1s are 3a, and now it's a compulsory rule to multiply with the second term also.
So 1 1s are 1, right? Plus plus plus, correct? So now again we are changing the sign. Both of them are in the plus, so we have to change the sign. Then it's converted now in the negative signs, minus. तो प्लस 3 है माइनस 3 है, that are प्लस माइनस माइनस, that is 3 minus 3 is 0, so it will be cancel out, खत्म हो जाएगा, 0 लिखने की जरूर नहीं है. प्लस माइनस माइनस 1 minus 1 अगेन 0, कैंसल आउट. देन कुछ बचा हमारे पास नहीं, तो क्या आएगा यहाँ पे आंसर, दैट इज 0. क्लियर? देन फाइनल आंसर दैट इज, क्वेश्चन में क्या आ रहा है हमको, 3a plus 1. व्हाट इज द फाइनल आंसर, दैट इज 3a plus 1. right? Okay, then so now first of all note down both of the questions, then we have to move on further. डन. सो नाउ इन द टुडे सेशन हमने आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 किए हमने. ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 11 में भी ए बी एंड डी तीनों सम्स किए हैं हमने, राइट? एंड ऑल 3 सम्स आर इम्पोर्टेंट. ओके, एंड बाकी सारे जो क्वेश्चंस हैं दैट इज सी ई एफ जी एच आई जे, ऑल दैट आर दी विद फॉलोइंग विद दिस सेम मेथड. ओके, बाकी सारे जो क्वेश्चंस हैं वो भी सेम मेथड फॉलो करेंगे. देन ऑल ऑफ यू हैव टू नोट डाउन द होमवर्क, दैट इज क्वेश्चन नंबर ए टू जे. सारे क्वेश्चंस जो हैं क्वेश्चन नंबर 11 में फ्रॉम द चैप्टर चेकअप, ओके, ऑफ द चैप्टर नंबर 6 आपको करने हैं. ओके, इन द होमवर्क आई विल रिपीट अगेन, दैट इज from chapter 6, from chapter checkup question number 11, from question A to J सारे जो है लॉन्ग डिवीजन के क्वेश्चंस. ओके, सेम लाइक सेम मेथड, सभी में सेम मेथड आएगी और सेम प्रोसेस हमको फॉलो करनी है. देन ऑल ऑफ देम हैव टू इन होमवर्क. ओके, सारे आपको होमवर्क में करने हैं. इफ यू हैव एनी क्वेरी एंड डाउट देन नोट द query in the comment section. Okay, so I hope all of you have to understand this long division method very easily. Okay, and all of you have no doubts and query at here, I hope. So in the next session we have to move on the question number 12 13. Okay, next session में हम आगे क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 करेंगे. एंड उसमें अगेन हम वहाँ पे अगर लॉन्ग डिवीजन होगी तो लॉन्ग डिवीजन करेंगे, और अगर दूसरी कोई मेथड होगी तो दूसरी कोई मेथड करेंगे. क्लियर? सो टिल देन गुड बाय एंड स्टे ब्लेस्ड.